what women want is respect. And if society at large and people at large are able to implement that, everything will come along. Well, your question about me being a minister, I just had 33 months on my hand, and that is a very little time to achieve what you really want, but I do really feel satisfied that I could do a lot in this very small time, and everything is positive. My ministry was, of course, women and child, and though it is a very small ministry as per as the other, as in comparison with the other ministries are concerned, as far as work is concerned, it is it's very large, and it can be expanded in a very big way, and there are lots of things to do. With women and child come women's security, it comes their health, they're bringing up the children, the orphans. And when I was a minister, we faced the pandemic. And people who worked on the ground with the women, like my Anganwadi Thais, they were there, like the Asha Thai, they were there. And people who suffered the most were also the women. So the extension of work was huge, and we did a lot. We were the highest human force that was working. If you want me to count on all that I did, it's a big thing. Yeah. And I think it'll take another half an hour. I think obstacle, when I say, I feel that women and child ministry has to depend on a lot of other departments, be it a finance department. Of course, yes. Yeah. So it solely cannot work as a department. Do you feel that this is a time that we have to empower the department first for taking any decision by its own? Yes, of course, yes. See, the thing is, the Ministry of Women and Child and the Ministry of Finance need to be tabled at an equal platform. Firstly, Ministry of Finance is the ministry that gives money and empowers the other department, where women are 50% of the lot, and they need to sit on the same table saying कि आप बताइए how much are you going to give to the women. So they need to be on the same platform, and it is then when actually what you call in Marathi is to reach to the last person. शेवटच्या नाऱ्यापर्यंत पोचायचं असेल. If you want to reach to the last person of the society, both these departments need to be tabled in an equal platform. राइट, द सेम क्वेश्चन मैं आपको टॉस करना चाहूँगी, क्योंकि पैंडमिक की बात निकली है, कोरोना की बात निकली है. मुझे लगता है कि शीतल म्हात्रे जी को अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो ताज्जुब की बात होगी, क्योंकि आप रास्ते पे उतर कर लोगों की मदद कर रही थी. और इस सब में हमने अगर नोटिस किया है तो महिलाओं का सहभाग सबसे अधिक था. महिलाएं रास्ते पर थी, आप सबसे आगे थी. वो एक कैसा अनुभव था? और जब भी ऐसा कोई पैंडेमिक या क्राइसिस आता है, इट इज़ ऑलवेज अ वुमेन who stay forward and take a first step to get out of the house and help the people. बिल्कुल, पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने अरेंज किया है. क्या होता है कि जब भी समाज में कुछ नहीं होता है, जब सब शांत होता है, तो महिलाओं की याद नहीं आती है. लेकिन जब भी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो महिलाएं ही रहती है जो पहली खड़ी हो जाती है. आपने अगर देखा होगा तो पैंडेमिक में महिला सफ़र तो हुई, लेकिन महिलाओं ने खुद को साबित करने की भी बहुत कोशिश की. आपने अगर देखा होगा तो पैंडेमिक में ऑनलाइन जो बिज़नेस है वो बहुत बढ़ गए. तो उसमें घर से खाना बनाने की कोई भी बात हो, या घर में बैठे बैठे कुछ कपड़े बना के बेचने की बात हो, तो मुझे लगता है कि तभी घर को संभालने का काम महिलाओं ने ही किया. पूरा दिन घर में बैठ के घर संभाले, बच्चों को संभाले, घर का पूरा काम करे, हर एक को सुबह शाम रात खाना दे, और उसके बाद घर में पैसा भी लेके आने की बात भी महिलाओं ने ही की.
तो मुझे लगता है महिला बहुत मेंटली स्ट्रांग रहती है, लेकिन उसको कभी स्ट्रांग समझा नहीं जाता है। अगर वो स्ट्रांग है, हेलो गे- हेलो हेलो Yeah. Okay. You start. हेलो Hello. हेलो, तो जब भी महिलाएं कभी कोई भी फील्ड में अगर आगे आ रही है तो लोगों को लगता ही नहीं कि वो उसके कैपेबिलिटी से आगे आ रही है। हमेशा ऐसा देखा जाता है कि उसने कुछ गलत काम करके ही वो वहाँ तक पहुँची है। वो कोई भी फील्ड रहने दो, पॉलिटिक्स में तो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन कोई भी फील्ड में महिला खुद के बलबूते पे आगे आ सकती है, ये समाज सोचता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को क्या चाहिए, तो महिलाओं को इतना ही चाहिए कि उसको एक व्यक्ति समझे, उसको जैसे मैम ने बोला उनको रिस्पेक्ट तो चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति, और हम कुछ नहीं मांगते, जैसे आप है वैसे हम भी है, इतना भी अगर आप समझे ना तो भी हमारे लिए बहुत है। यही मैं टॉस करना चाहूँगी आपको Yeah. कि ड्यूरिंग कोरोना हमने आपको भी देखा कि आप वो सूट पहन के काम कर रही थी। यू आर एक्चुअली कंडक्टिंग लॉट ऑफ मीटिंग्स, गिविंग सॉल्यूशंस, ट्राइंग टू गिव सॉल्यूशन, बिकॉज वो ऐसा एक फेस था जो किसी को प्रेडिक्ट कोई कर नहीं सकता था. सो वी हैव सीन यू नो वेयरिंग दैट सूट एंड hitting this. I did wear the PPE kit. What happened? हेलो, Please check with the mic. Hello, please check with this mic. Hello, is the sound person? Yeah. Yeah. All three? Okay. Not this one. So, COVID was a difficult period for everybody, especially the women. Like in the first question that you asked is about what do the women expect. So I guess they expect respect the most. During COVID, we had just come to power. We'd just taken oath on the 30th of December, and March, like exactly this time, was the time when COVID was declared, and we had to shut down the budget session, and we had to reach to our respective districts and take care of everything. So every day, that time, every day was a challenge, and we had to take decisions on spots. We had to there was something new which came up every day, and it wasn't very easy. This is a program to empower women, so I would like to share with you all the experience that I had as a guardian minister. I was in charge of Amravati. I was in charge of I was a guardian minister over there, and there used to be new GRs coming up every day. So apparently we had to convert our hospital in the super speciality into the COVID hospital. And then there were people, we had to serve food to them. So there were different tenders coming up, and there were different medicines that were coming up. And it was a chaos, and it was confusion, and it had to be handled. So there are a few people who tend to show that they are social workers, but in fact they create mockery out of everything. And I wanted to know whether the mockery is truth or what the collector is telling me is truth. So I said, I need to give a surprise visit to the hospital. And I said, I'm not going to get scared. My people are admitted over there, and I want to see if they are receiving proper medication and if they are receiving proper food. And believe me, I reached the hospital. I called my the CS over there, and I said, tell me how dangerous this is
And he said, it is dangerous, you cannot go touch them. I said, fine, but I want to see. And I had reached the hospital and I said, give me a PPE kit, and I wore the PPE kit. And I walked up to the hospital and I walked up to the patients, seeing whether the food that they are eating is right or not, seeing whether the medicines that they are giving is right or not, seeing whether the doctors that are treating them. Yes. Dalji said that, people always doubt on the intellectual capacity of a woman. That's what she just mentioned. Yes, absolutely right. So then people who wanted to create mockery out of everything kept away from me, and they knew that there was a woman who is very serious about her job, and most of the time women are serious about the work that they do. Even at the level of corruption, if you see, where there's a woman officer or a woman working, you will see that it is less. Yeah. I will not endorse that there is no corruption when women are there, but of course, in comparison to the male counterpart, it is less, and it is and the purpose for what you are put to, women do work on it. Yeah, but there is a need that we need to increase the number of women participation in politics. आज लोग डरते हैं पॉलिटिक्स में आने से, खास करके महिलाएं 4 बार सोच रही हैं. एक एटमॉस्फेयर ऐसा बन चुका है अनफॉर्चुनेटली. कितना थ्रेटनिंग है ये. Sheetal has just gone through everything, so she'll tell. Yeah, take this. हेलो, महिलाओं की आवाज़ दबाने की कोशिश तो नहीं हो रही है? नहीं, देखिए, मुझे तो ऐसे लगता है कि हमेशा महिलाएं कुछ करने की कोशिश करती है और उसको पीछे खींचने के लिए बहुत सारे लोग रहते हैं, और अगर कुछ बहुत अच्छा काम करने वाली महिलाएं रहेगी तो उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करना बहुत ही इजी रहता है, और हमेशा बहुत सालों से, बहुत युगों से यही होता रहा है. सीता ने तो एक ही बार अग्नि परीक्षा दी थी, अभी की वुमेन को तो हमेशा अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, और पॉलिटिक्स में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पॉलिटिक्स की में काम करने वाली महिलाओं को बहुत अलग नज़रिए से देखा जाता है कि वो इतने बड़े पोस्ट पे कैसे पहुंची, वो आगे आगे कैसे जा रही है, वो खुद के काम से जा रही है, ऐसा कभी किसी को नहीं लगता. उनको लगता है उन्होंने कुछ गलत काम किए होंगे इसीलिए वो आगे जा सकती है. तो मुझे लगता है कि ये सोच बदलना बहुत ज़रूरी है. अगर आप महिलाओं को पॉलिटिक्स में आने के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट है काम करना और ख़ुद को बार बार साबित करना, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. लेकिन हमारे सामने यशोमती जैसे आदर्श है, सुषमा स्वराज जी है, जिनको हम आदर्श हमेशा मानते रहे, तो मुझे लगता है कि इनको देख के लगता है कि नहीं, औरत भी कुछ कर सकती है. देखो, कोई भी चीज़ अगर जेंट्स ने की तो वो कर सकता है, लेकिन वही चीज़ वो औरत ने की तो उसने कैसे की, इसके लिए 10 बार सोचा जाता है. There is a very you're falling short of time, is it? I have wasted one whole day just to be for your program, so I guess you must listen to what we are saying. So I think what Sheetal said, Vrushali, I read a wonderful lines yesterday, and I would like to read those lines back to this and on this program. See, it's about you were talking about women politicians and more women's participation. For that matter, why in politics, in the other field also. So the words are like, I've died 1,000 deaths. And it applies to every woman wherever she is, however powerful she is, or however downtrodden she is. So ma'am, it is like, I've died 1,000 deaths, and each time reinventing myself brighter, stronger and purer than before. From the midst of destruction, well, that is what comes to every woman, I guess. And that's what even Sheetal said, ki, in Marathi it means bayanna akkal naste. So it does come, and that destruction does come in everybody's life. However powerful she is, from the midst of destruction, I become the creator of myself.
And from the midst of darkness, yes, I become my own source of light. So I think this is what all the women need to do. We all need to become our own source of energy, and come what may, be what may, walk the path of truth, and it all comes back to you. However people try to belittle you, however people try to show you your worth, you become everything around if you believe in yourself, and if you keep thinking in a positive manner. And that's what I guess this whole program is about, and thank you. Well, absolutely. A last word from शीतल मात्रे. कैसा देखते हैं कि क्या लगता है कि महिलाओं के लिए सरकार ने एक तो क्या करना चाहिए? आप सरकार में है इसलिए खास करके ये सवाल आपको पूछ रही हूँ. और शीतल जी ने सरकार के बाहर किया है इनको. ये तो गेम होते ही रहते हैं, लेकिन मैम आप जब तक थी बहुत अच्छा काम करते थे, हम आपको देखते थे. पॉलिटिक्स अपार्ट, लेकिन एज अ वुमेन आपने बहुत अच्छा काम किया. नहीं, ज़रूर ये जो सरकार नई आई है उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए. आज ही कल से ही एसटी में जो ट्रैवल करने वाली विमेन है उनको 50% ऑफ दिया है. और जो नए अभी का अर्थसंकल्प है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें महिलाओं के लिए उन्होंने दिए. मुझे पता है कि मैडम उसके बारे में बहुत बात करना चाहूँगी, लेकिन मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले तो 18 इयर्स कंप्लीट होने तक महिलाओं को 75, जी बिल्कुल, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, वो बताना चाहिए. 75,000 रुपीज़ उनको उनके खाते में जाएगा. बाद में मुझे पता है कि मेट्रो सिटी में, मुंबई में सबसे ज़्यादा वुमेन के लिए टॉयलेट बहुत ज़रूरी है. तो 200 टॉयलेट्स हाईवेज़ पे बनाने की हमने नया अर्थसंकल्प में हमने पैसे रखे हैं. 50 हमने उनके लिए स्कूल्स के बाजू में रहने के लिए जगहें वो भी हम बना रहे हैं उनके लिए. फिर महिला बचत गट के थ्रू बहुत सारे क्लस्टर्स में हम काम करने की, उनको काम देने की कोशिश कर रहे हैं. फर्स्ट टाइम अर्थसंकल्प में इतने बड़े बात. दिस आई फील respect is all that women want. Yes, Yeah. absolutely. And that has to come through the policy. While talking on women and on Women's Day, we were asked in the house to talk about them, and I said all that women want is respect, and that is what is not given. We keep talking about it, but see, I quoted my own example saying that the property rights of the women are still not being done. So that's a big thing, and I said, though we are falling short of time, we end on a note that all that everybody needs to give us is respect. Well, that's a good not note, reservations. because the show is called We Women. Thank you. The show is called We Women Want, and as Madam with MLA said, we women want respect. That's all we want. Thank you so much to our leaders, women leaders who joined us for this panel, and Vishali who moderated that session. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.